Hello everyone, welcome to Boundless Learning. This is the first video of this channel, and as you all know that class 10th boards are soon approaching. So the first series which I would be starting on this channel would be this quick revision kind of a video in which we'll be discussing the whole class 10th science syllabus with these short revision videos. So let's get started with the first chapter, which is chemical reactions and equations. So to start with the basic or to start with the introduction of this chapter, we all know that whenever a chemical change occurs, a chemical reaction, whenever a chemical change occurs, we can write this chemical change in the form of a chemical equation or a chemical reaction. So this was the basic that whenever a chemical change occurs, a chemical reaction takes. So let's start with what a chemical equation is. So whenever this chemical reaction occurs, we can represent this chemical reaction in the form of a equation which is called as a chemical equation. Now this chemical equation can be written in two forms. Either it could be a word equation or it could be a chemical equation. Let's say for example, um, I have a magnesium ribbon. I am burning this ribbon in the presence of oxygen. So this is the uh, experiment which we are conducting, that we are burning this magnesium ribbon in the presence of oxygen. And we have to write this chemical equation or this chemical reaction in the form of a word equation as well as a chemical equation. So what would be the word equation? Magnesium, when reacts with oxygen, gives us magnesium oxide. This is the form of a word equation or a chemical equation where magnesium and oxygen are the reactants on the left hand side, whereas magnesium oxide is the product. Now we can write the same equation in the form of a chemical equation. Now what is a chemical equation? When we write this word equation in the form of the symbols of the elements, it's called a chemical equation. For example, Mg, symbol of magnesium, plus O2, symbol of oxygen, gives us magnesium oxide, MgO, which is the symbol of magnesium oxide. So this is the form of a chemical equation. Now let's start with another topic, which is chemical equations, or there are some rules for writing this chemical equation. So let's start by discussing the rules which we have to keep in mind while writing the chemical equation. The first and foremost rule is the reactants are always written on the left hand side of the equation, whereas the products which are being formed are always written on the right hand side of the equation. For example, let's say reactant 1 and reactant 2 are involved in a chemical equation and they form a product which is product 1. So these reactants would always be written on the left hand side, whereas the product would always be written on the right hand side, and the arrow always points in the direction of the product. It's directed from the reactant side to the product side. Okay, this was the first rule. The second is a single arrow. This is a single arrow. Single arrow indicates the direction of the reaction.
That means when the reactant is forming a product, this single arrow represents the direction in which the reaction is proceeding. And this single arrow represents irreversible reaction. इसका ये मतलब है कि जब भी हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक सिंगल एरो लगा होगा, दिस मीन्स दैट द रिएक्शन रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बन सकता है. Then there is also a double arrow. Double arrow indicates reversible reaction, which means that reactant 1 plus reactant 2 can combine to form product 1 plus product 2, और प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 डिकम्पोज होके वापस से रिएक्टेंट्स बना सकते हैं. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. देन a plus sign is inserted between two or more reactants. Like plus sign is inserted between two or more reactants. Next one is the specific conditions in which the reaction is taking place. The specific conditions are mentioned on the arrow. Specific conditions mentioned the arrow. Now, what could be this specific condition? These specific conditions could be temperature, then presence or absence of a catalyst, could be pressure conditions in which the reaction is taking place. So these are all the specific conditions. Let's say, for example, magnesium reacts with oxygen in the presence of heat to give us magnesium oxide. So this heat which I have written, this is a type of a specific condition which we are mentioning above the arrow, ताकि हम ये केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन ले सकें, थोड़ा और हम ये अपनी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए वी एड स्पेसिफिक कंडीशंस ऑन द एरो. नेक्स्ट कम्स the chemical equation can also be made informative by adding the physical states of the reactants and the products. For example, magnesium is a solid. I can write S, small s in the bracket in front of magnesium. Oxygen is a gas. I can write gas, and magnesium oxide is again solid. So I can write these physical states: solid, liquid, gas, aqueous, AQ in front of these reactants and products. Next one is whenever in a reaction, either on the reactant side or the product side, whenever a gas is liberated, we use upward arrow, and when a precipitate is formed, we put a downward arrow. Okay, so these were all the some of the rules for writing the chemical equations. Like reactants would always be written on the left hand side, products on the right hand side. We use single arrows for irreversible reactions and double arrows for reversible reactions. We put a plus sign in between the reactants as well as the products. Then we mention the specific conditions as well as the physical states in front of the reactants and the products. Specific conditions like temperature, catalyst, and pressure are mentioned on the arrow. Now, instead of heat here, I can also put a triangle. This triangle also means heat. Triangle is the symbol for heat. So you can either write heat or you can put a triangular arrow. Now, the last rule is for gas. In front of gas, we put a upward arrow, and when a precipitate is formed in the product side, we put a downward arrow. These were all the rules. Now comes the most important topic of this chapter, which is balancing
of chemical equations. Okay, so we start with the balancing of chemical equation. अब बैलेंसिंग का बेसिक क्या है? बैलेंसिंग में सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट. अब हम यही एग्जांपल ले लेते हैं. Mg plus O2 gives us Mg, no, MgO. Now what we have to make sure is मैग्नीशियम के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वल होने चाहिए. दिस इज व्हाट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स. Now there are certain steps जो involved होते हैं balancing में. For step 1 है हमारा, we have to write the word equation. This is the first step, right? Word equation. जो भी हमारा experiment हो रहा है हमको उसका word equation लिखना. Word equation लिख लेते हैं हम. Magnesium plus oxygen gives us magnesium oxide. This is the first step. Second step is we have to write the chemical equation, right? Chemical equation. What would be the chemical equation? Mg plus O2 gives us Mg. This is the second step. Step 3 is we have to count the number of atoms of each element on both the sides. Count the number of atoms of an element on LHS as well as RHS in the equation. हमारे पास ये equation है. Mg plus O2 gives MgO. Mg plus O2 gives MgO. Now we'll start by counting the number of atoms of each element involved in this equation. इसके लिए हम एक सबसे पहले टेबल बना लेते हैं with 3 columns. What would be the 3 columns? In the first column we'll write atom or component which is involved. Second column would be left hand side. Third column would be right hand side. So the first component involved, the first atom involved is magnesium. Count the number of magnesium atoms on the left hand side. It's 1. Okay. Number of magnesium atoms on the right hand side, 1. Okay. The other atom involved is oxygen, O. Number of oxygen atoms on left hand side, it's 2. Number of oxygen atoms on the right hand side, 1. Now we have to balance this equation, and for balancing we have to write the whole numbers, or we have to multiply these involved reactants and the products by a whole number. Okay, so balance करना हम शुरू करते हैं इसको. यहाँ पे magnesium is 1 on the left hand side and 1 on the right hand side. So this equation is balanced. Now let's count oxygen on the left hand side and 1 on the right hand side. So we have to balance this. And for balancing this, we can multiply this by 2. Okay. Now if we are multiplying this by 2, I'll write 2 in front of MgO. Now after writing 2, the number of magnesium atoms also changes on the right hand side. So I'll cut this and write 2. Now oxygen is balanced, 2 on the left hand side, 2 on the right. This one is balanced. Now let's come to Mg. 2 on the right hand side, 1 on the left hand side. So I can multiply this as well by 2. I'll write 2 here. Okay. So 2 magnesium on the left hand side,
2 magnesium on the right hand side. This is also balanced. So the balanced chemical equation comes out to be 2 Mg plus O2 gives 2 MgO. This is my balanced chemical equation. Okay. The next step is to make this balanced chemical equation more informative. Okay. And to make this more informative, we'll write specific conditions on the arrows. Write specific conditions and physical states. Okay. We had the balanced chemical equation 2 Mg plus O2 gives 2 MgO. This is the balanced chemical equation. Let's write the specific conditions. Heat, specific conditions done. Then write the physical states. Mg is solid, oxygen is gas, MgO is solid. So this is the balanced as well as the chemical equation in which we have mentioned the specific conditions as well as the physical states. This is the final balanced chemical equation. This was the most important topic of this chapter. Next one is types of chemical reaction. So there are 4 basic types of chemical reactions. First one is combination reaction. Second is decomposition reaction. Third one is displacement reaction. And the fourth one is double displacement reaction. Let's start with the combination reaction first. So as the word suggests, combination. When 2 or more substances combine to form a single product, the reaction is called as combination reaction. For example, the example of this is preparation of iron sulfide. Preparation of iron सल्फाइड. अब लेबोरेटरी में हम आयरन सल्फाइड कैसे फॉर्म करते हैं? We form iron sulfide by combining iron plus sulfur and this forms iron sulfide. This is the simplest example of combination reaction. Another example is जो हमने अभी balancing में देखा था, Mg plus O2 gives MgO. So combination reaction is nothing but a reaction in which 2 reactants are combined to form a single product. This is called a combination reaction. Now let's come to decomposition reaction. Decomposition reaction is the one in which a single compound splits into 2 or more simple substances. For example, we have mercuric oxide. This is mercuric oxide. When I heat this mercuric oxide, this forms mercury and oxygen is liberated. Put this upward arrow because oxygen is a gas. Now let's balance this equation. This would be the balanced chemical equation.
So this is the example of a decomposition reaction when one single reactant is broken down or is decomposed into multiple products. Now let's come to combination reaction. There are two types of combination reactions. They could be either endothermic reactions or they can be exothermic reactions. एंडोथर्मिक मीन्स द रिएक्शन जहां पर हमें हीट की रिक्वायरमेंट हो. एंडोथर्मिक रिएक्शन इज हीट रिक्वायर्ड. ठीक है. द रिएक्शंस आर accompanied by the absorption of heat. और एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां भी होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन मिक्सचर है, उसके अंदर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है, हमारी टेस्ट ट्यूब जो है वो कोल्ड हो जाएगी. This is the example of endothermic reaction. Exothermic reaction is in which heat is released. इसमें हमारा reaction mixture hot हो जाता है because the heat is released. Now decomposition reaction की भी दो types होते हैं, सब types हम बोल सकते हैं, which is thermal decomposition और photochemical decomposition. Decomposition reactions जहां पर heat की वजह से या temperature की वजह से the decomposition is carried out, उसको हम बोलेंगे thermal decomposition. For example, ये mercuric oxide जब decompose हो रहा है into mercury and oxygen, this would be the example of thermal decomposition. जहां पे हमारा photochemical is in the presence of light, जैसे UV rays हो गए. UV rays की presence में जो decomposition हो रहा है उसको हम बोलेंगे decomposition, photochemical decomposition reaction. इसका एग्जाम्पल है जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, AgBr का decomposition. AgBr डिकम्पोज होता है in the presence of UV light into silver or bromide. This is the example of photochemical decomposition. Next comes displacement and double displacement reaction. अब डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में थोड़ा सा समझना हो. व्हाट इज अ रिएक्टिविटी सीरीज? तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसा चार्ट या ऐसा टेबल हम बोल सकते हैं इन विच हाइड्रोजन को एज रेफरेंस लेकर सारे हमारे मेटल्स अरेंज्ड होते हैं अबव एंड बिलो हाइड्रोजन, जहां पे जो सबसे टॉप पर मेटल होगा इट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जो सबसे बॉटम में प्रेजेंट होगा इट इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. ठीक है. तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है. अब रिएक्टिविटी सीरीज में ये है कि जब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर मेटल्स प्रेजेंट है दे कैन डिकम्पोज द मेटल्स प्रेजेंट बिलो देम. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जिंक और कॉपर का एग्जाम्पल लूं, तो अगर हम एक रिएक्शन मिक्सर लें जिसमें कॉपर हमारा लिक्विड सोल्यूशन में है और जिंक हमारा सॉलिड में है, तो ऐसे रिएक्शन में जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को फ्रॉम इट्स सोल्यूशन. जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन. और ऐसा क्यों होगा? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. और अगर यहीं पे अगर मैं जिंक का सोल्यूशन लूं और कॉपर को सॉलिड रखूं, तो क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? नो, द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सोल्यूशन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज. अब चलते हैं हम अपने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जैसे अभी मैंने जिंक और कॉपर का एग्जांपल बताया, हम वही ले सकते हैं कि हमने एक रिएक्शन मिक्सर लिया जिसके अंदर सोल्यूशन क्या है, मेरा सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का CuSO4.
इसके अंदर मैंने जिंक की एक स्ट्रिप डाल दी Zn। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि जो मेरा रिएक्शन मिक्सचर है उसका मिक्सचर में आ जाएगा ZnSO4 और मेरे जिंक का जो प्लेट थी या जिंक की ये रॉड थी उसके ऊपर आ जाएगा मेरा कॉपर। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, जिंक ने कॉपर को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। Why? Because zinc is more reactive। तो यही हम रिएक्शन ले सकते हैं, Zn plus CuSO4 gives us ZnSO4 plus Cu। This is the example of displacement reaction, जहां पे Zn क्या है, जिंक, ये है हमारा कॉपर सल्फेट, और थोड़े से हम इसमें यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन, फिजिकल स्टेट्स लिख सकते हैं। जिंक इज solid, copper sulfate is aqueous, zinc sulfate is again aqueous, and copper is solid. Okay, this is zinc sulfate and Cu is copper. Okay. This is the example of a this is the example of a displacement reaction. अब चलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शंस इन विच आयंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एक्सचेंज प्लेसेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। इसमें प्लेस एक्सचेंज हो जाती है बस। फॉर एग्जांपल, अगर हम रिएक्शन करवाएं NaOH का, which we know is a strong base, with HCl which is a strong acid, ये क्या कर लेंगे, ये जितने भी हमारे आयंस इन्वॉल्व है, आयंस कौन से हैं यहाँ पे, Na है, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये प्लेसेस अपनी स्वैप कर लेंगे। जैसे Na के साथ यहाँ पे अभी OH था नेगेटिव में, यहाँ पे Cl नेगेटिव था, तो Na के साथ Cl आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे H और OH साथ में मिलके वाटर की फॉर्मेशन करा लेंगे। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म अ सॉल्ट। और यहाँ पे सॉल्ट हमारी कौन सी है, सॉल्ट हमारी है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, साथ में वाटर हमारा फॉर्म हो गया। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड which is a strong base, and hydrochloric acid which is a strong acid. So these were the 4 reactions. अब एडिशनल कुछ रिएक्शंस आते हैं हमारे, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारा इधर एडिशन होगा ऑक्सीजन का या रिमूवल होगा हमारा हाइड्रोजन। जैसे इसके बाद आता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में हमारा रिमूवल होगा ऑक्सीजन का या एडिशन होगा हाइड्रोजन का। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, कार्बन के अंदर जब हम H2 ऐड करेंगे, 2H2 ऐड करेंगे, तो ये फॉर्म करेगा हमारा मीथेन। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, बिकॉज इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन का Fe2O3 में मैंने CO ऐड किया, तो ये फॉर्म कर लेगा Fe प्लस CO2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरा CO जो था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे CO2 बन गया, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ये वाला जो रिएक्शन है, ये है मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद एक और रिएक्शन आता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स, जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल,
हम एक रिएक्शन लेते हैं H2S plus Cl2 gives us HCl plus S. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे H2S था और यहाँ जाके इसने क्या बना लिया, S बना लिया, मतलब हमारा जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो गया. जब हमारा हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है. अब Cl की बात करें, Cl था यहाँ पे और यहाँ पे HCl बन गया, मतलब हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया. जब हमारा हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये होता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन. तो जिस भी रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा हो, दैट वुड बी एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल हो सकता है C+O2 gives us CO2. अब ये जो मैंने ऊपर रिएक्शन बताया था Fe2O3 plus CO gives us C plus CO2. अब यहाँ पे CO का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे Fe2O3 जब Fe फॉर्म कर यहाँ पर इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा इसका. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. ये भी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल. ठीक है. सो दिस वाज द चैप्टर. इस पूरे चैप्टर में दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे. कौन कौन से, बैलेंसिंग और दूसरा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो कि दोनों ही हमने डिस्कस कर लिए हैं. नाउ देयर आर सर्टेन रिएक्शंस इन एनसीईआरटी जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो in the description box of this video, I am attaching two PDFs. First one is the notes of the complete chapter, and second PDF has the important reactions from NCERT, which you will have to memorize. So with this, we have come to an end of this chapter. And if you have any doubts regarding any of the topics or any of the thing which I have taught, you can either comment in the comment box or you can also email me on this email ID. I'll make sure to reply or revert as soon as possible. So we'll continue with the next chapter in the next video. Till then, keep learning. Thank you.